Hey guys, welcome back. I'm live now. Yeah, I hope I'm audible to you all. और तो आज की वीडियो हमने बात करनी थी कि जो है क्या होते हैं म्यूचुअल फंड्स. Give me a second to actually change the interface. Basically, funds. Yeah. So today we are going to talk about what are mutual funds, what are different types of funds जिसमें जो है लोग इन्वेस्ट करते हैं, be it real estate, investment, trust, or be it debt-based funds for those people who are not actually looking to take a lot of risk and are scared of the equity markets. So that's why people start with debt-based funds. That's the essential goal here. Okay, so just give me a hey ho hi if you're able to hear me, because as per OBS I'm seeing that I'm going live and I'm audible to you all. Let's see the chat. Okay, shows healthy connection, stream health is good. Okay, yeah, yeah. So I'm audible. That's great. Good to know. One sec. Alongside that, pop out track. And just let me know when you're able to see the screen. Because without wasting a lot of time, let's start. The goal is to learn and help each other. That's our goal. And because of which, without wasting a lot of time. So, yep. So, this is the presentation. This presentation is not actually made by me. I'm only using this presentation, but the goal is to actually teach each and every one of you what are mutual funds, and this presentation was actually made by a couple of my friends, so I'm using that. I took their permission, so again, no problem here. Okay, so let me start by sharing my screen. Okay, yeah, that's good. Perfect. So here you go. So this presentation is made by Xi Jinping investors. That's just a joke, just for the sake of comedy. Do not take any meaning into this. All right, Team Xi assignment by for different types of asset classes which are present in a mutual fund. So what are mutual funds in India? What are the categorization of mutual funds, types of mutual funds, and how to do fundamental analysis of all these mutual funds. Then there is selection of these funds, analysis strategy, fund 1, fund 2, and at page 67, we end this presentation. Then we move on to Subex analysis, because just 2 days back they released their annual report talking about what their goals in the future are. So we will go through that presentation as well, because that would be important. I'll just open it alongside that. So if you have been invested in the stock, you know that this stock has been continuously falling and falling and falling. So at its high back in December was 56. Okay, January maybe 55. Yeah, that's good. If I was you, if I was to actually sell this stock, I would actually like hope कि ये 60 तक चला जाए, and then I would make the choice of selling it off. But still we don't know. So okay, let's see क्या होता है, कैसे इस चीज को जो है हम करते हैं. ठीक है, back to this presentation. So what are the various asset classes that people invest in? Okay, so mutual funds are based off of different types of asset classes. First is real estate. So if you think about real estate, one thing would come to mind, that are you going to purchase properties? And it's not like that. So of course, also you can purchase properties, you can purchase plots, and it can be commercial plot, or it can be a residential plot. So जैसे लोग बोलते हैं ना कि we'll just buy a house and then we'll flip it off. So most of the time real estate developers
These are the type of people who just flip a property and flip it for profit. That's how they earn their living. But in this case, we are also going to talk about real estate investment trusts. So these are a different type of asset class जिसमें म्यूचुअल फंड्स टाई इन होते हैं, और इससे मतलब इनकी सिक्योरिटीज से टाई इन होता है पूरा उनका म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर, जो एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू ऑफ दैट वेरी म्यूचुअल फंड. So, what are real estate investment trusts? They provide real estate exposure without the need to own, operate, or finance properties. So, if you are someone who actually believes that real estate sector has potential, it's going to grow, and you don't want to take as much volatile risk as equities, but still a little bit higher risk than fixed deposits kind of thing, or debt instruments जो थोड़े से ज़्यादा secure होते हैं, then real estate might be your own thing. Now, real estate has become a popular investment vehicle over the last 50 years or so. Why is that? Because as India grows, more and more people would actually, start to purchase houses. Everyone wants to actually live in a bigger house. Everyone wants to live in a luxurious home. If you actually belong to a middle class income, or even someone who has aspirations, सबको एक बड़ा घर अच्छा लगता है, जो इस बात में कोई डाउट नहीं है, राइट? उस वजह से रियल एस्टेट इज ऑब्वियसली अ गुड इन्वेस्टमेंट in that case कि उसका potential अच्छा होता है. But comparing it to actually the likes of equity markets and nifties, it's not really that volatile, and because it's less volatile, इसका growth भी जो है equity market से कम रहता है. Now, okay, then there is commodity. तो commodities हो गई आपका oil, steel, मेटल्स, जो स्टील में ही मतलब मेटल आता है. देन देयर इज ग्रेन्स, राइस हो गया, राइस की एक कमोडिटी होती है. कॉर्न इज अ कमोडिटी. So commodities is basically a good that is used in commerce that is interchangeable with other goods of the same type. So these are essentially, अगर मैं इससे थोड़ा सा एनएफटी से रिलेट करूं, so these are fungible tokens, क्योंकि these are interchangeable with someone. So for example, you had 10 kg of rice with you, and a person has 2 kg of rice with you. So उन राइस को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते unless until they are of different quality. That's the only measure of benchmark that you can actually relate with, कि उनको इंटरचेंज करना है. सो दीज आर नॉट वेरी डिफरेंट, दैट्स व्हाई दीज आर कमोडिटीज जो आपको हर जगह हर गली कूचे पे मिल जाती है. दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड कमोडिटीज. Commodities are most oftenly used as inputs in the production of other goods or services. So investors and traders can buy and sell commodities directly in the spot, cash market, or via derivatives such as futures and options. Now, futures and options के बारे में मैं बात नहीं करूंगा. I have no clue what are those, and I have no interest in learning those. I believe in doing the fundamental analysis. I believe in doing full-fledged forensic analysis की जो है stocks और reports में जाके देखो. I believe कि numbers ज़्यादा अच्छी बातें बताते हैं than charts and all these things. You can have your own perceptions about it, but this is my opinion. I'm entitled to that. So owning commodities basically in a broader portfolio. So if you want to diversify your portfolio, it's encouraged because it is a good hedge against inflation. That's why it's a good diversification strategy if you are someone who actually is looking to invest in a commodity asset class. Now comes the main player, equities. Now, equity kya is? Simply, it's the value of share of that company. It represents the value that would be returned to company shareholder if all the assets were liquidated and the company's debts were paid off. So जब आप बोलते हैं ना कि इसका 10 रुपए का शेयर है एंड कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स हैं, so 10 लाख शेयर्स और 10 रुपए का एक शेयर, so essentially कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई 1 करोड़. ठीक है? So that is the valuation of that company. Also think of equity as a degree of residual ownership in that firm. So let's say you bought 10,000 shares of ITC. वो पड़ेंगे आपको 20 lakhs के. Right now, based looking at the market price, आ जाओ दिखाई देता हूँ. Yeah. So ITC. Yeah, ITC right now stands at 234 rupees per share. That is the latest price as per Friday.
तो लेट्स से यू टुक ओनरशिप ऑफ 10,000 शेयर्स ऑफ आईटीसी, आपको पड़ेंगे वो 23 lakhs के। 23 lakhs से आप बोल सकते हैं कि ना आई हैव ओनरशिप इन आईटीसी वर्थ 23 lakhs, एंड बेस्ड ऑफ द प्राइस दैट उसका इंक्रीज होगा इवेंचुअली इन द फ्यूचर, यू विल सी that your ownership will not increase because the number of shares remain the same, but the value of that shares and the value of that equity that increases obviously here. Coming back, so equity represents the shareholders stake in the company identified on the company's balance sheet. So the number of shares is the each shareholder stake. So आपको दिखते होंगे ना, promoters के बाद इतना % stake है, public has this much stake, and then FIIs, financial institutional investors, they have this much stake. So वो उसकी जो है बैलेंस शीट पे आपको पूरा दिख जाएगा एक कंपनी की। Calculation of equity in a company's total assets minus its total liabilities is used in key financial ratios such as ROE, which is return on equity. Shareholders equity is equal to, so basically total assets minus total liabilities is the value of shareholders equity. इतना अभी हमने जानना है equity के बारे में as an asset class when it comes to mutual funds. Now there is also one thing that, you know, if you don't want to go ahead and just purchase one equity because you are like, you know, मुझे अपना income diversify करना है and I want to actually don't want to hold these equities directly. That's why people purchase equity based mutual funds. Also, people invest through mutual funds and through ETFs. So ETFs are exchange traded funds, which I will do in a future live video. I will explain what are ETFs, उसमें आप कैसे invest कर सकते हैं and how do they actually grow the cost of ETFs कैसे grow होती है, उसका tax कैसे होता है. I will tell you all about that in the future, but अभी ETFs are basically indirect stock ownership. Here an individual gives his investment amount in the hands of a professional manager. So professional manager, same just like a mutual fund, it's like a professional manager, same जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ही ईटीएफ्स को जो है सर्कुलेट करती है. इन द यूएस अगर आप बात करेंगे देन देयर इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर की ईटीएफ वहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बट इट्स आल्सो प्रीटी सिमिलर. तो वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अभी तो बिल्कुल मत करो वरी. सो so what are mutual funds? Let's get to the point. Mutual funds are one of the most popular investment options these days. A mutual fund is an investment vehicle formed when an asset management company, AMC, or fund house pools investment from several individuals and institutional investors with common investment objectives. तो मैंने लास्ट अपने लाइफ में पूरा आपको बताया था कि एएमसी का क्या पर्पस होता है और वो कैसे जो है आपका पैसे को पूल करती है. So for those folks who are scared of, you know, investing in the market and don't want to take any headache कि मेरे पैसे जो है कल कम हो रहे हैं या जो है वो परसों कम हो रहे हैं, and it makes you feel scared. Obviously अगर आपका पैसा, आपने जो hard earned पैसा कमाया है, if it goes away it's going to hurt, right? So because of that people give their money to experienced fund manager जिनकी एक अच्छी फाइनेंस में डिग्री होती है. दे हैव प्रूवन देयर एबिलिटी टू मेक मनी. दे आर स्ट्रॉन्ग विद देयर डिसीजन मेकिंग स्किल्स. दे आर स्ट्रॉन्ग विद देयर एनालिटिकल स्किल्स, एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्चुअली पेड अ वेरी हैंडसम सैलरी कि यू नो यू मैनेज दीज पीपल्स मनी एंड तुम्हारे को जितना तुम उसका पैसा ग्रो करोगे तुम्हारा एक परसेंटेज वेरिएबल उसी के साथ अटैच होगा कि तुम्हारा पैसा भी उतना ही ग्रो होगा इवेंचुअली इन द फ्यूचर बेस्ड ऑफ तुमने कितना बेनिफिट दिया है तुम्हारे इन्वेस्टर को जिसने पैसा डाला है AMC में. Fund manager who is a finance professional manages the pool investment. यही मैंने आपको बताया. He or she purchases securities such as stocks, bonds that are in line with the investment mandate. So the investment mandate here is set by SEBI, which is Securities and Exchanges Board of India. Yeah, SEBI. So वो पूरी authorizing entity है जो decide करती है कि क्या होगा इस चीज में, क्या regulation है. वो पूरी रेगुलेशन इज डन बाय सेबी. One second. Also, one can diversify their portfolio by investing in mutual funds such as asset allocation would cover several instruments. So
एक सेकंड मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो ऑल्सो वन कैन डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एज एसेट एलोकेशन. सो सम इन्वेस्टर्स हु आर स्ट्रॉन्ग विद देयर मनी बट आर लुकिंग कि ना हमने हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंफॉर्मेशन है, हमारे को आईटी सेक्टर की इंफॉर्मेशन है, बट वी आर नॉट वेरी मच गुड विद बैंकिंग सेक्टर. So what they do is they also invest certain these individuals. हम बोलेंगे कि ना हम एक ऐसे स्टॉक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेंगे जो बैंकिंग सेक्टर को जो है ना ओवरव्यू करता है, ताकि हमें उसका भी बेनिफिट मिल जाए एंड वी आर एबल टू डाइवर्सिफाई आवर एलोकेशन. देन देयर आर दोस म्यूचुअल फंड्स जो डायरेक्ट इंडेक्स को जो है निफ्टी हो गया या सेंसेक्स हो गया, दे कंप्लीटली ट्रैक दैट और उसी को मैनेज करते हैं. नाउ दीज आर पैसिवली इन्वेस्टमेंट फंड्स जो एज इवन वॉरेन बफेट सेज दैट if you just want to invest your money and don't want to actually take a headache कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, इनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कैसे पढूं, जस्ट सिंपली गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन S&P 500 फंड फॉर 10 years and you'll see how much return you'll get for your money. So S&P Standard and Poor 500 which is US's index जिसको ट्रैक करता है S&P 500 फंड. ये बता दिया मैंने. या नाउ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. देखो जरा, mutual funds in India. The first introduction of a mutual fund in India occurred in 1963 when the government of India launched Unit Trust of India. So 1963 में mutual funds were introduced by UTI, which is Unit Trust of India. UTI enjoyed a monopoly in the Indian mutual fund market until 1987. So practically they were uncompeted till 24 years. उनके पास एक पूरी authorized monopoly थी. When other government-controlled Indian financial companies established their own funds, SBI आ गया, Canara Bank and Punjab National Bank, they also came into the play. So UTI is a very famous name. आप लोग अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में पढ़ते हो, अगर आपने क्रिकेट में IPL और वर्ल्ड कप की अगर आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो, चाहे हॉटस्टार पे देख रहे हो या टेलीविजन पे, तो यूटीआई का हमेशा आपको एक ऐड आएगा. एंड दैट इज ऑल्सो कोरिलेटेड विद DSP म्यूचुअल फंड जो बोलता है म्यूचुअल फंड सही है. धोनी जिसकी आजकल बहुत ज्यादा एक्टिवली ऐड कर रहा है, एग्रेसिवली ऐड कर रहा है जहां पे देखा जाए. नाउ इन 2019, और ये डेटा मैंने आपको इवन इन द लास्ट लाइव दिया था, दैट इन 2019 एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ 23.16 trillion rupees was recorded on February 2019. In February 2019 में average assets under management was 23.16 trillion rupees. That's a massive growth compared to 5.09 trillion rupees in February 2009. So देखो जरा, that growth has been almost 4.5 times तब से अब तक. तो 4.5 times fold increase हुआ है 10 within a period of 10 years, और अभी भी ये इंडस्ट्री का मैक्सिमम पोटेंशियल कैप नहीं हुआ. Now, mutual funds in India. There are as many as 44 AMFI, which are Association of Mutual Fund Registered Fund Houses in India. So, 44 Association of Mutual Fund Registered India with more than 2500 mutual fund schemes. म्यूचुअल फंड सही है, एग्जैक्टली. तो ये स्लोगन है एसेंशियली इंडिया में लोगों को अवेयर करने के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, यू आर बी गोइंग टू सेव योर मनी एट अ मच हायर रेट ऑफ रिटर्न दैन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, जिससे आपका पैसा इवेंचुअली वुड गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, बिकॉज राइट नाउ इन्फ्लेशन इन आवर कंट्री स्टैंड्स एट 5.5 to 5.6%, whereas return is somewhere around 4 to 6% in a fixed deposit. So fixed deposit में मत डालो यार पैसा. इतनी सी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले लो, थोड़े से स्मार्ट बनो अपने पैसे को लेके. Now this campaign that mutual fund सही है is across various media, across TV, newspaper, radio, across the web on Hotstar, and not only in English but also in vernacular language. So vernacular आपकी स्टेट वाइज लैंग्वेज होती है, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है जो आप सुनते हैं. फॉर एग्जांपल तमिल हो गई, और तेलुगु हो गई, और महाराष्ट्रियन लैंग्वेज हो गई, मराठी हो गई. सो उसमें भी जो है इसका कैंपेन एड्स चलती हैं ताकि लोग अवेयर हों थ्रू आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री. कमिंग टू कैटेगराइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स. तो अगेन इक्विटी. सो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स क्या है? दे आर mutual funds invest pooled amount in stocks of public companies. Public companies like
IOL Chemicals, IOCL, Indian Oil Corporation of India, then EIL, Engineers India Limited, ITC, Imperial Tobacco Company, Subex Limited. These are all public listed companies जो इंडियन स्टॉक मार्केट पे ट्रेड करती हैं, BSE या NSE पे, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों बॉम्बे में है. Equity fund managers apply different style for stock picking when they make investment decision. So every fund manager, और जहां तक फंड मैनेजर की भी बात नहीं है, यहाँ पे इवन एवरी रिटेल मैनेजर हैव देयर ओन फंडामेंटल फिलोसफी ऑन हाउ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट देयर मनी. सो दे हैव डिफरेंट स्टाइल्स. हाँ, उनका जो बेसिक फंडामेंटल रहता है ना, जो जिससे वो स्टार्ट करते हैं, वो सेम रहेगा, बट देयर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग when they are going to sell, that is always going to be different because everyone is an individual जिनकी अपनी perceptions हैं इन चीज से related. Some fund managers use value approach for stocks, that is value investing, searching for stocks that are undervalued when compared to other companies. So यहाँ पे people what they do is they look for stocks in an industry, and in that stock they look for stocks which are an underdog. So जो उतना अच्छा compared to their peers, they are still smaller, but they have a potential to grow क्योंकि उनको नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं and the company is growing. So वो अपने पैसे को ग्रो करने में लगी हुई हैं कंपनीज में. Another approach is to just look at the growth, trying to find stocks that are growing faster than their competitors. तो यहाँ पे आपने एक सेक्टर देखा, उसके अंदर स्टॉक के अंदर आपने चेक किया कि इस स्टॉक में इतनी ज्यादा ग्रोथ क्यों हो रही है. यू डू द एनालिसिस, यू लुक एट द नंबर्स, और उसके बेसिस पे यू आइडेंटिफाई कि ओके, they have gotten these many recent projects, their revenue streams are being diversified, so that is why this stock has a much higher potential to grow than their competitors. Now some managers just buy both kind of stocks, creating a portfolio of both value stocks as well as growth stocks. So undervalued आपने stocks भी पकड़ लिए, और जो stocks जो grow कर रहे हैं वो भी, ताकि आपके investors को, जिन्होंने fund manager, जिसका पैसा fund manager basically invest कर रहा है, they get a higher rate of return. Debt funds. एक सेकेंड. Okay, yeah, sorry. Okay. Coming back to debt-based funds. So debt mutual funds is a type of mutual fund that is designed especially for low-risk investors. So if you don't want your money to, just your wealth to erode, and you are looking for a higher rate of return than a fixed deposit, then people choose debt funds because the goal is to actually do a capital appreciation with decent return on investment. बहुत ज़्यादा investment आपको return नहीं मिलेगा. You can expect 8%, 10%. That would be the max limit that you can get from debt mutual funds. Sometimes, if an industry is in recession, then you can get a higher rate of return. And the goal for investors who invest in debt mutual funds is that you actually get a regular income from these debt mutual funds and capital appreciation on the principal amount that you have invested. तो आपका जो पैसा जो आपने डाला है उस पे जो है ना कैपिटल एप्रिसिएशन होता रहा है, इवेंचुअली वो ग्रो करे और एक रेगुलर इनकम बन जाए. Now we come to balance funds. As the name suggests, this is a mix of equity funds and debt funds. So they invest in both equities and fixed income securities which are in line with predefined investment objectives of the scheme. Sorry. So these type of funds invest in both equities and fixed income securities which are in line with the predefined investment objective of the scheme. Equity part provides growth and debt part provides stability in returns. Ideally, people do not recommend this type of mutual fund because you do not know what part is actually in debt and what part is in equity, and you are not too much aware क्योंकि वो एक essentially black box बन जाता है which is completely opaque in nature. You don't get to see, and there's a lack of transparency essentially here कि आपको पता नहीं आपका पैसा इसमें क्यों जा रहा है. इसलिए people ideally do not invest a lot in these type of funds. But again, you have your own choice. Do your own prior research before investing in such type of mutual funds.
तो मेरा काम है आपको सिर्फ एजुकेट करना कि किस टाइप के फंड्स होते हैं. योर गोल इज टू एक्चुअली डू द रिसर्च आफ्टर व्हाट आई हैव टोल्ड यू, ताकि आप अपने डिसीजंस ले सकें, एंड यू शुड नॉट ब्लेम अदर्स फॉर द डिसीजंस दैट यू टुक. These types of funds are meant to diversify away a little of equity risk by exposure to debt while maintaining decent returns. So, equity risk का जो exposure है ना, उसको तुम जो है ना hedge करते हो against the debt, जो debt instruments में पैसा डला होता है उसके लिए. Some investors want just a single choice that offers a decent chance at a good return on their money, and that is more likely to avoid major volatility when the economy slows down, जो current scenario है. So even though जैसे 2020 से 2022 तक we had a massive bull run, जिसमें कंपनीज ने बहुत हाई जो है ग्रोथ दिखाई, एंड निफ्टी इवन ग्रू फ्रॉम 8,000 से 18,000 तक गया. सो इस टाइप के सिनेरियो में बैलेंस म्यूचुअल फंड्स डू नॉट गिव अ वेरी हाई रिटर्न because equities have outperformed the market by a massive margin. But in turn, when our markets slowed, there is sideways movement going on, then this is a good. Then this would be a good choice for you to actually consider. ठीक है कि हमारा रिटर्न ज्यादा नहीं है, बट एक फिक्स इनकम बनी हुई है इससे. सो ये सब थे डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एसेंशियली जिनकी कैटेगराइजेशन होती है. नाउ वी आर कमिंग टू टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स. Now this is a multi-cap fund. As the name suggests, this consists of small cap, mid cap and large cap funds. They are invested across market capitalization of all the companies that they invest in. So these funds resort to portfolio gyrations commensurate with the market conditions. इसका मतलब ये है एसेंशियली ये स्मॉल कैप कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, मिड कैप कंपनीज जिनका पोटेंशियल है टू एक्चुअली बिकम लार्ज कैप, एंड लार्ज कैप कंपनीज दैट आर स्टिल ग्रोइंग एंड हैव द पोटेंशियल टू ग्रो, ये उनमें इन्वेस्ट करते हैं. These funds invest in stock across market capitalization, that is, their portfolio comprises of large cap, mid cap, and small cap. They are in relatively less risky because their risk is actually hedged by the large cap companies, because जो प्योरली मिड कैप या स्मॉल कैप फंड होते हैं उनमें इतना ज्यादा एलोकेशन नहीं होता है. देयर मेजॉरिटी 40% ऑफ देयर एलोकेशन इज इन लार्ज कैप, ताकि आपके पैसे का नुकसान ना हो. मल्टी कैप फंड इसलिए होते हैं and not suitable for aggressive investor. So if you are someone who wants to aggressively grow their money कि 5 साल में 6 साल में मेरे को अपना पैसा डबल करके ही रहना है, then this would not be ideal suggestion for you. Obviously you can do your own research. आप जो है इसकी पूरी स्टॉक मतलब मल्टी कैप फंड के आप देखो कौन कौन सी कंपनीज प्रोवाइड कर रही है AMCs, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन डिसाइड कि इसका रिटर्न हिस्टोरिक 5 ईयर रिटर्न कितना रहा, 3 ईयर के कितना था. यू कैन मेक दैट डिसीजन. पूरा आपको टिकट टेप पे ये डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा आसानी से. यू डोंट हैव टू डू दैट. अगर आप चाहते हो कि मैं करूं तो अगेन इन्फॉर्म मी कि आपको ऐसा चाहिए. ओके हाँ. Coming to large cap funds, funds which invest in a larger proportion of their corpus in companies with large market capitalization are called large cap funds. According to SEBI, these companies fall in the top 100 list of companies according to market capitalization. So जो companies जो है जिनका market capitalization इतना बड़ा है कि वो top 100 companies में आती हैं country की, based on their market capitalization, ये उनमें इन्वेस्ट करता है ये फंड. सो एसेंशियली दीज आर ब्लू चिप स्टॉक्स जो स्टेबल हैं, पीपल ट्रस्ट देम. एग्जांपल हो गया टाटा, देन देयर इज एग्जांपल ऑफ रिलायंस. यू कैन ट्रस्ट इन दीज टाइप ऑफ स्टॉक, these type of stocks to be present in that large cap fund. These companies are highly reputed, have an excellent track record of generating wealth for their investors over a long period. Also, these large cap funds are known to generate regular dividends and steady compounding of wealth. These schemes carry a lower risk as compared to small cap or mid cap schemes because they actually provide a steadier return. Obviously, because ये वो कंपनीज हैं जो ऑलरेडी मैसिव बन चुकी हैं, एंड बिकॉज ये मैसिव बन चुकी हैं, दे आर नॉट गोइंग टू टेक मेनी हायर रिस्क ताकि उनके इन्वेस्टर्स का पैसे का लॉस ना हो. एंड बिकॉज ऑफ दैट ये
उतना ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं करेंगी, बट एसेंशियली दे आर स्टेडी इन ग्रोथ. दे आर गुड फॉर इन्वेस्टर्स जिनकी रिस्क एपेटाइट लो है. सो रिस्क एपेटाइट इज समथिंग दैट यू हैव इंडिविजुअली, कि अगर आप यंग है, योर रिस्क एपेटाइट इज हायर. If you are in your 30s to 40s, you won't have as high risk appetite as you had in your 20s. And for those who are in their 40s or above 40s, 50s में आ गए, उनकी तो बिल्कुल कम, because now they are looking for retirement and they want their wealth to be preserved. Goal is wealth preservation in that case, not wealth appreciation. Mid cap funds. Now, by market capitalization, जिन stocks की market capitalization में rank होती है 100 to 250, these are those mid cap funds. Essentially, the stocks that have market capitalization of above 10,000 crores, they come in that category of mid cap. Large stocks are expected to be Larger stocks are expected to be less risky, whereas smaller stocks may have higher potential to. So mid cap में भी अब इसके अंदर हो गया कि ना, there are those जो which rank between 200 to 250, they have a higher potential क्योंकि वो इसमें छोटे हैं, वो grow करेंगे. Whereas those in the 100 to 150 या 170 तक, these would be the mid cap funds जिनका जो है अभी growth उतनी हुई नहीं है, जिनकी growth काफी हो चुकी है, and they are going to be less risky in making their decisions to actually make their revenues go up. Mid cap fund is a pooled investment such as mutual fund that focuses on companies with a market capitalization in the middle range of listed stocks. So essentially इसके अंदर जो है वही बात मैंने बताई कि ये based on the market capitalization जो middle range में आती है, not too risky and not कि आप large cap stock में translate हो गए हो. It doesn't come into that category. Mid cap stocks tend to offer investors greater growth potential than large cap stocks. Obviously, क्योंकि large cap तो already सबसे बड़े और सबसे ज़्यादा massive हैं, सबसे ज़्यादा बड़े और massive हैं, so you have to make sure कि उतना नहीं है. One sec. Okay. Okay. Now coming to small cap fund. Now these are risky funds. So small cap companies, you don't know, they might go down. So यहाँ पे this stock basically invests in companies which includes all stock except the largest 250 stock by market capitalization. So 0 to 100 market capitalization जो rank है, that belongs to large cap. 100 to 250 that belongs to mid market, mid cap fund basically. हाँ, mid cap. And then small cap हो गया anywhere above 250 range of stocks by market capitalization. These are small cap funds. These funds are relatively riskier and volatile in short to medium term because these companies have a chance of going bankrupt. इनका chance होता है कि इन्हें SEBI delist कर दे stock market से if there is something like shady going on. And India में in the past there have been many instances that something shady was going on, so SEBI banned them from trading in the stock market or entirely. So कुछ लोगों का पैसा इस वजह से डूबा हुआ है. But because this is a fund, they will have a list of 20-30 companies in their fund, depending on कि कौन सी AMC इसको मैनेज कर रही है, कौन सा फंड मैनेजर इस चीज को मैनेज कर रहा है. तो एक दो अगर चली भी जाती है, the rest are able to recuperate the wealth that you already had. So essentially एक दो ने अगर आपके पैसे का रिटर्न 0 दिया, बट बाकी अगर ग्रू बाय 10x 5x 6x, आपका एवरेज रिटर्न फिर भी 5x 6x रहेगा क्योंकि इसके अंदर रिस्क इतना हाई है. The stocks of these companies can possibly twofold or triple up over an exceptionally brief period. So ये short to medium term का मतलब है 3 to 5 years time horizon आपको इसे देखना पड़ेगा. Like most of the investments in the market, risks always persist. It is advised that you keep a bit of the best small cap funds in your investment portfolio to make sure that you are not missing out on the returns you can get from it. So the higher the risk, the higher the reward. ऐसी
रेशियो चलती है. तो if you are going to invest in that amount, make sure that your allocation is not very high first, and you need to be very conscious of the time horizon that you are investing from. Because if you are going to invest from the long term perspective, this is not the point for you. But if you are looking already at a time horizon of 3 to 5 years, then this can give you a very good return on, tripling up your investment amount. So that is what you need to make sure about. So अब आते हैं ELSS पे. Now, equity linked savings scheme. This is a stock or a fund which is जिसके बेसिस पे आपको गवर्नमेंट पे सब्सिडी मिली हुई है. देयर इज टैक्स रिडक्शन दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स. सो दीज म्यूचुअल फंड्स मेंटेन पोर्टफोलियो लार्जली इन स्टॉक्स. पूरा इनका क्योंकि इक्विटी एज यू कैन हैव नेम, देयर इज अ लॉक इन पीरियड फॉर 3 years. सो अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए डाले एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें 1 लाख रुपए डाले अप्रैल में या मई में, देन फॉर द नेक्स्ट 3 years, सो मई 2025 तक आप वो पैसे नहीं निकाल सकते. देर इज द लॉक इन पीरियड. सो दैट इज गुड, क्योंकि समटाइम्स वी आर वेरी इमोशनल ह्यूमन बींग्स, और यहाँ पे थोड़ा साइकोलॉजी की बात करते हैं. वी आर वेरी इमोशनल इन नेचर एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड आर इमोशंस वेरी वेल. सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट if we see a very massive price fluctuations in whatever amount that we have invested in, sometimes we may panic and sell it out. लेकिन अगर आप 3 साल तक इसको लॉक इन रखेंगे, तो आपका फायदा इसमें ये होगा कि वो स्टॉक्स इवेंचुअली अगर मार्केट में थोड़ी सी गड़बड़ हुई, देयर वाज अ बियर मार्केट या थोड़ा सा एक छोटा रिसेशन आ गया फॉर ए स्मॉल टाइम पीरियड 1 साल का, आफ्टर दो 2 साल तो उसके बाद भी होंगे ना. सो वो उस टाइम में आपका कैपिटल एप्रिसिएशन वुड बी हाई. अनदर बेनिफिट इज कि बिकॉज ELSS स्कीम्स को यूज करके आप टैक्स बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं. यू कैन अवेल अ टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट अप टू अ लिमिट ऑफ 1,50,000. सो सेक्शन 80C of tax deduction, that is what is actually said, that you can avail a tax deduction if you have invested an amount of up to 1,50,000, and the income that you earn under this scheme at the end of 3-year tenure would be long-term capital gains. So equity funds में long-term capital gain tax होता है 1 लाख रुपए, 10% अगर आपका जो capital appreciate हुआ. Let's say you invested 20,000 rupees in equity market, 1 साल बाद आपने निकाला 50,000 रुपए, your gains was 30,000 rupees. 30,000 rupees पे आपका 10% tax लगेगा. That would be your 3,000 rupees. So और वो भी 30,000 का आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि आपका इनकम जो है क्रॉस नहीं करी 1 लाख को. 1 लाख क्रॉस करके आपका जो टैक्स होता है, देन यू पे 10% ऑफ इट, जो उसकी टैक्सेशन होती है इन दिस ELSS scheme. So I hope I explained it to you beautifully. Then there are funds that are focused on dividend yields. These mutual funds invest in stocks and follow strategy of investing in stocks which generates higher dividend yield. Dividend yield mutual funds are equity funds which invest in equity and equity related instruments of companies which are known to declare high dividends. Essentially, जो भी stocks which are previously based on the past performance known है कि जो है ये लोग dividend देते हैं for their investors, जो उनका profit आया. So essentially dividends are the percentage of profits that the company has gotten, promoters को मिलना as well as their shareholders उनको जो मिलता है. तो उस फंड में इन्वेस्ट कर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला फंड इज नोन एज डिविडेंड यील्ड फंड. A company can declare high dividends only if it makes good profit, because it's a direct correlation with the profit that the company has gone through. Therefore, most of these stocks belong to profit-making companies with an excellent track record. अब एग्जाम्पल हो गया HDFC बैंक, एग्जाम्पल आ गया एशियन पेंट्स, नेस्ले. These are companies जो massively grow कर गई है, इतना उनका महंगा स्टॉक प्राइस हो गया है. उसके बेसिस पे
you can see that your capital, the companies are generating good profits, and they're also sharing that profit with the people who believed in them and actually purchased, decided to take their skin in their game और purchase कर लिया उनके stock, their stocks and their shares of that company. Dividend yield fund invests around 70 to 80% of its corpus in stocks that have a dividend yield higher than that of the market or benchmark. So 70 to 80% of its जो भी stock होंगे will be invested in those stocks जिनका higher dividend yield होगी compared to the market, जो other stocks हैं जो dividends देते हैं. So अगर ITC हो गया, ITC is a dividend paying stock, but उसका dividend बहुत high नहीं है. So it is an average level. So ITC would not be a part of this corpus even if I'm not wrong. But again, I can be wrong. I'm open to being wrong क्योंकि उसी से मैं भी सीखूंगा. Sectoral funds are what? Sectoral funds investment वो सिर्फ एक industry या एक sector में they start to invest. The goal is to actually look at one sector. So infrastructure हो गया, infrastructure sector जिसमें आ गया road building, pipes. Then there is IT sector, Subix उसमें आता है. Then real estate, so real estate investment trust, वो भी एक तरह का सेक्टर ही आ गया वो उसमें. जो रियल एस्टेट डेवलपर्स की जो कंपनीज होती हैं, दे कैन बी दैट. These are usually available as mutual funds or exchange traded funds, which are ETFs. There is more volatility in sector funds because they focus on only one area of economy. तो अगर budget 2022 में या budget 23 में they decided that they are going to introduce a new policy that is going to completely change the scenario of that very sector or that industry, there can be massive fluctuations in the price of that stocks. और वो ड्राइव ही उससे करता है कि नेशन की पॉलिसी जो है ना उसको अपोज ना करे बल्कि उसको सपोर्ट करे. सो द फंड इज डायरेक्टली कोरिलेटेड कि क्या होगा उस फंड में, क्या होगा उस कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज में टू ग्रो दैट. Investing in sector funds can be done through active management of funds or through passive management funds, the latter of which usually follows sector specific indices. Indices, हाँ. ठीक है. Contra fund, even I'm not too aware about that, so पहले मैं एक बार इसको पढ़ता हूँ. Contra fund is defined by it's against the wind kind of investing style. The manager of Contra fund bets against the prevailing market trends by buying assets that are underperforming or depressed at that point in time. This is done with the belief that herd mentality followed by investors on the street will lead to mispricing of assets, which will pick up steam in the long run, creating opportunities for investors to generate superlative return. Okay, so यहाँ पे जो contra fund है, the goal is that they are going to invest in companies which are not being heard of a lot. So एक हो गया herd mentality कि सब बोल रहे हैं ITC ऊपर जाएगा, ITC ऊपर जाएगा, तो they are going to invest in that. But then there is someone who comes along and say कि ना ITC ऊपर नहीं जाएगा, let's invest in India Cements. I'm just giving an example. Please don't take it as an investment advice. First of all, so when I say कि India Cements ऊपर जाएगा, so it is going against the trend, against the wind कि this everyone is going against it, and I'm going to hedge my bet against the general population's idea. So this is what the core purpose of this contra fund is. This is done with the belief that herd mentality जो सब लोग जिस पे बिलीव करते हैं, हम उसकी वजह से जो उसकी एसेट्स है ना दैट गेट मिसप्राइस्ड. क्योंकि अगर essentially stock market is driven by speculation and investor emotions. तो अगर investor emotions ज्यादा किसी चीज में चला जाएगा, so it can also be wrong, and based on that we need to be very aware of कि हम किस चीज में जो है ना उसके invest कर रहे हैं. So mispricing of assets can happen, which will pick up steam in the long run. So उस वजह से contra fund basically goes against the grain in this regards, and in turn generates superlative returns. So it is more like taking a contrarian view of an asset when it witnesses an exuberant demand from investors or is shunned by them at a particular point in time due to short-term triggers. So contrarian से मेरा मतलब हो गया you are going to go against the thought process of everyone and see कि how we are going to make
we are going to actually look at the demand that is from investors or somebody who is going to sell them, क्योंकि अगर कोई ट्रिगर आ गया या फिर जो है ना इन्वेस्टर इमोशन जस्ट सडनली चेंज्ड। सो ये पर्पस है कॉन्ट्रा फंड का। फोकस फंड्स, जैसा नाम इसका सजेस्ट करता है, दीज आर लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स जिसमें ये इन्वेस्ट करता है फोकस। सो बहुत इसमें जो है ना, दिस फोकस फंड इज अलाउड टू इन्वेस्ट इन मैक्सिमम ऑफ 30 स्टॉक्स। सो बहुत सारे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू दिस फंड, जो फंड मैनेजर है एसेंशियली। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, कैटेगराइजेशन एंड रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स मैक्सिमम 30 में जाता है। इट होल्ड्स स्टॉक्स इन लेस देन 3 सेक्टर्स ओनली, and since focus funds allocate the holdings between a limited period number of cautiously picked stocks with potential business plans as compared to the returns obtained by funds with diverse stock portfolio. So यहाँ पे क्योंकि आप जो है बहुत कम नंबर ऑफ स्टॉक्स को चूज कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप किसको पिक करेंगे एंड कैसे उसमें अंदर इन्वेस्ट करेंगे। इसका गोल है यू हैव टू ऑब्टेन बेटर रिटर्न्स कंपेयर टू द रिटर्न्स ऑब्टेन्ड बाय फंड विद डाइवर्स स्टॉक पोर्टफोलियो। तो किसी ने, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वैल्यू इन्वेस्टिंग करी हुई है, या किसी ने ग्रोथ इन्वेस्टिंग के थ्रू दे आर एक्चुअली पिकिंग अप देयर स्टॉक्स एंड डाइवर्स नंबर ऑफ सेक्टर्स में दे हैव इन्वेस्टेड देयर मनी। This fund has to actually outperform those stocks because it's only looking at a very few number of stocks, that is the number is 30 और वो उससे कम रहता है generally. So you have to keep an eye out कि how do you want to proceed with this fund. और इसके अंदर आपको अपनी अगेन यू हैव टू लुक एट द हिस्टोरिक रिटर्न एज वेल एज हिस्टोरिक परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड टू सी कि आप इसमें अगर अपना पैसा डालेंगे टू सी कि आपका रिटर्न कैसा हो। वैल्यू फंड, नाउ वैल्यू फंड फॉलोज अ स्ट्रेटजी दैट फोकसेस ऑन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स दैट आर अंडरवैल्यूड इन प्राइस बेस्ड ऑन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अंडरवैल्यूड स्टॉक्स जो होंगे एक इंडस्ट्री में, they look for stocks for various reasons that are trading below their actual worth. So the intrinsic value of that stock है वो कम है जिसपे अभी वो मार्केट पे ट्रेड कर रहा है, and based on that they make the decision that let's invest in it because after 4-5 years the intrinsic value of that stock and the actual value of that stock will coincide, and that is when they will see a massive wealth appreciation happen. So fund manager की strategy होती है to look for those stocks which are undervalued in comparison to their peers in that very sector. The premise behind value investing strategy is that once the market realizes the true value of these stocks, the share price will increase. वही मैंने आपको बताया पूरा। Value stocks are frequently well-established companies that offer investors dividend payments. Warren Buffett, one of the most valued successful investors, is a value investor. And who doesn't know about वॉरेन बफे? अगर तुम इस चैनल पे फाइनेंस के बारे में बातें कर रहे हो, मेरे से सुन रहे हो, वॉरेन बफे नाम तो तुम्हें पता ही होना चाहिए यार एट दिस पॉइंट ऑब्वियसली। नाउ हाउ टू डू फंडामेंटल एनालिसिस एंड व्हाट आर द टूल्स फॉर फंडामेंटल एनालिसिस फॉर म्यूचुअल फंड्स? Expense ratio. So expense ratio is basically the amount that is taken by an asset management company to look after दैट स्टॉक। वो आपका पैसा जो मैनेज करेंगे ना, उसकी एक फी अमाउंट होती है उस स्टॉक में से दैट दे विल डिडक्ट। सो फॉर एग्जांपल यू इन्वेस्टेड 1000 रुपए इन अ लार्ज कैप फंड एंड उसकी एक्सपेंस रेशियो थी 0.5। सो 50 पैसा उस 1000 रुपीज में से आपके पैसे होंगे 999.5 रुपीज इन्वेस्ट, और 50 पैसा दैट विल गो टू द फंड मैनेजर जो इसको मैनेज कर रहा है। दैट वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, उनकी ऑफिस कॉस्ट, उनकी ट्रैकिंग द एक्सपेंसेस, वो सारा हो गया। बेसिकली इट्स द परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स दैट आर स्पेंट टू मैनेज अ म्यूचुअल फंड। वही मैंने आपको बताया, रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड फंड्स टेंड टू बी सिमिलर, expenses become an important factor while comparing bond funds. Now, SEBI has stipulated a limit that a fund can charge. Largest component of expense ratio is the management and advisory fees. And if you take, so इसके अंदर होता है regular type fund and direct fund. Regular जो होते हैं
दैट इज आपका ब्रोकर या आपका फाइनेंशियल एडवाइजर वो आपको स्टॉक रिकमेंड करता है, वो आपको हमेशा रेगुलर प्लान दिलवाएगा, क्योंकि वो उसकी एक्सपेंस रेशियो हमेशा हायर होगी. लेट मी टेल यू व्हाई. क्योंकि दैट पर्सन विल ऑल्सो गेट अ कमीशन, क्योंकि उन्होंने आपको साइन अप कराया उस फंड के लिए, और वो कमीशन का परसेंटेज वुड बी समवेयर अराउंड लेट्स से 1.5 हो गया इंस्टेड ऑफ 0.5, क्योंकि वो रेगुलर प्लान है. सो एक परसेंटेज पार्ट जो हर बार आपका एसआईपी के थ्रू हुआ या एक वन टाइम लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, दैट वुड बी एक्चुअली गिवन टू द ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर जिसने आपको ये स्टॉक दिलवाया. सो दैट इज अनदर थिंग जो एक प्रैक्टिस है इंडिया में. दैट्स हाउ दीज डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्क इन द इंडस्ट्री. दैट इज practically how it's done, or it's a means of earning for these financial advisors. So I'm not against that, but all I'm saying is कि उस चीज की ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा इंडिया में accessible नहीं है. People are not very aware about that. Also keep in mind that a lower expense ratio does not necessarily mean that it's a better managed fund. Good fund वो होता है जो आपका रिटर्न देता है with minimal expenses. वो होती है उसकी efficiency. बट अगर मान लो लोअर एक्सपेंस रेशियो है, मान लो 0.2 है या 0.1 है, बट आपका रिटर्न जो आया वो 10% 11% है, और उस पे जो है ना आपका जो ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा था, देन इट्स नॉट रियली अ गुड फंड. सो एक्सपेंस रेशियो से जो है ना सिर्फ बेंचमार्क मत करना कभी भी एक म्यूचुअल फंड को. हाँ, देखना जरूर, इट्स एन इंपॉर्टेंट मेट्रिक टू लुक एट. अल्फा. So if you watch Ankur Warikoo, alpha और beta के बारे में he always talks about, when it comes to stock picks. Alpha basically represents the performance of a portfolio relative to the benchmark. Here what the benchmark is Nifty or Sensex. So वो हमारे इंडिया के basically indices हैं, और जो आपका पोर्टफोलियो जो फंड मैनेजर देख रहा है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो, आईटी सेक्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हो, वो उससे उसे कोरिलेट करता है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर निफ्टी 5% से ग्रो करा, तो द गोल ऑफ दैट फंड मैनेजर इज कि उसका अल्फा जो है 5% से ज्यादा होना चाहिए उस फंड का, बेसिकली है. सो द बेसलाइन नंबर फॉर अल्फा इज 0, विच इंडिकेट्स कि पोर्टफोलियो ट्रैकिंग परफेक्टली विद द बेंचमार्क इंडेक्स. निफ्टी के परफेक्ट उसके इतना है. इन दिस केस द इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैज नीदर एडेड और लॉस्ट वैल्यू अगर उसका अल्फा 0 होगा. नाउ अगर इसका 3 हो गया, अल्फा का 3, सो अगर निफ्टी जो है 5% बढ़ता है, सो 3 times दैट एक्चुअली द परफॉर्मेंस ऑफ दैट स्टॉक वुड एक्चुअली इंक्रीज बाय. सो आपके फंड की परफॉर्मेंस 3 टाइम वुड बी हायर बाय निफ्टीज. और अगर यही नंबर नेगेटिव में होगा, देन जैसा वो परफॉर्म कर रहा है उससे कम परफॉर्म करेगा. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू एंड प्राइस प्लस डेप्रिशिएटेड शेयर प्राइस माइनस स्टार्ट प्राइस डिवाइडेड बाय स्टार्ट प्राइस, वेयर DPS is distribution per share. ठीक है? So think about it like this. In this case, a stock or fund did 3% better than the benchmark index जो निफ्टी या सेंसेक्स हो गया, and अगर -5 है, it did 5% worse than the index. So alpha should always be positive and higher in number. Than 0 होगा तो समझ लो आपको इंडेक्स जितना रिटर्न मिलना है, तो उससे अच्छा तो अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, व्हाई नॉट जस्ट इन्वेस्ट इन अ पैसिव फंड जो निफ्टी या सेंसेक्स को ट्रैक कर रहा है डायरेक्टली. Then comes the beta. Beta basically tracks the volatility of fund in relation to the market as a whole. Again, same parameters, तो वो performance track कर रहा है, यहाँ पे volatility. So, volatility essentially क्या होगा? Beta for your investment, expected return from your investment, expected return from the market, जो index है आपका, and then the risk-free return. Essentially, a fund with a beta 1 means कि it will move as much as the benchmark. अगर ये 1 से हाई होगा, then it will move much more. It would be highly volatile. अगर ये निफ्टी अगर हिलता है 5% से, it would move much higher than निफ्टी. कम होगा, अगर 1 से कम होता है आपका बीटा, then उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है स्टॉक में, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी हाई होनी चाहिए. सो हाई बीटा, लो बीटा एंड हाई अल्फा, दैट शुड बी द फंड essentially. Conservative investors should focus on mutual fund with low beta. Aggressive investors can opt to invest in mutual fund which have a higher beta value. क्योंकि volatility is again directly tied into the high risk, high reward situation.
if you don't have a high reward at the end of a high return, at the end of a high risk, you are making a mistake when it comes to this thing. R squared मैं नहीं बताऊंगा, ये थोड़ा complicated है, but I will just tell you here what it actually means. So it measures the percentage of an investment's movement that are attributed to movements in its benchmark index. So ये percentage है जितना benchmark index move करा उसके percentage में कितना आपका fund move करा. Mutual fund should have a balance in R square and ideally should not be more than 90 and less than 80. So basically इसका जो percentage है less than 80 नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नहीं होना चाहिए 90 से at any point in time. Beta is dependent on the correlation of a mutual fund scheme to its benchmark index. So basically it also is somewhere similar to the beta R squared जो value है. While considering the beta of any fund, an investor should also consider statistical concept called R squared that measures the correlation between beta and its benchmark index. So ये correlation को track कर रहा है between जो beta है एक fund का and the benchmark index, that is Nifty Sensex, क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं. Beta of a fund has to be seen in conjunction with the R squared for better understanding the risk of the fund. Coming to Sharpe ratio. एक second. Yeah, coming to Sharpe ratio, it is an indicator of whether the investment's return is due to good investing decision or result of excess risk. Higher Sharpe ratio is always better. What is it basically? So Sharpe ratio, as you can see, is return of portfolio minus risk-free rate divided by standard deviation of portfolio's excess return. So ये इसकी measurement होती है Sharpe ratio की essentially. This ratio helps investor to know कि ये safe to invest है by taking the quantum of risk. Essentially, it is measuring कि आप उसमें कितना risk ले रहे हैं and the return आपको मिल रहा है उस portfolio पे minus that risk-free rate. The higher the Sharpe ratio, the better a fund's return relative to the amount of risk taken. This is because it implies that it has generated higher returns for every unit of risk that was taken. On the contrary, a negative Sharpe ratio indicates that a risk-free asset would perform better than the fund being considered. Standard deviation is pretty simple, तो मैं इसको बस एक बार में I'll just go through it. I will not go in detail इसके बारे में. Mutual funds में the standard deviation indicates how much the return is deviating from the expected returns based on its historical performance. In other words, it's evaluating the volatility of the fund. So again, ये evaluate करता है कि आपका return कितना उसके जो है ना expected return से based on historical performance में deviate कर रहा है. And standard deviation measures the risk by measuring the degree to which the fund fluctuates in relation to its average return of a fund over a period of time. A higher standard deviation number indicates that the net asset value of the mutual fund is more volatile and it is a riskier fund than a fund with lower standard deviation. So higher standard deviation is a bad thing. It has to be a lower standard deviation for a fund that you must look at. ठीक है, तो ये था सारा म्यूचुअल फंड के बारे में. हाउ यू कैन डू फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ ऑल दिस म्यूचुअल फंड्स, कैसे कैसे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर मेजर्ड अलोंगसाइड इट, और फिर कैसी उनकी मार्केट कैटेगराइजेशन होती है, बीट कॉन्ट्रा फंड, बीट फ्लेक्सी कैप फंड, बीट लार्ज कैप फंड, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड, and how you must actually make decisions as per your risk appetite and as per your goals in getting a return from the market. तो अगर आपको wealth preservation goal है, then large cap fund should be your something that you need to consider. Obviously you need to do your own further research, क्योंकि मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ बट मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस और नहीं दूंगा, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस.
Advantages basically large cap fund के क्या होते हैं? They have previously historically given satisfactory returns over long term. They help in steady wealth creation and pay out dividends regularly. Large cap और इसका रिटर्न भी लो है essentially. So जिनकी low risk tolerance है, large cap funds is for you. They are capable of withstanding a bear market, क्योंकि bear market में भी कंपनीज जो अच्छे से परफॉर्म कर रही थी पास्ट में और जो बड़ी कंपनीज हैं उनका क्या नुकसान होगा आखिर? दे आर स्टिल गोइंग टू ग्रो, दे आर गोइंग टू गेट ऑफर्स, हाँ थोड़े कम प्रोजेक्ट्स मिलेंगे बट स्टिल दे आर गोइंग टू गो अप. सो इन्वेस्टिंग इन लार्ज इज ऑफर स्टेबिलिटी. इफ योर गोल इज स्टेबिलिटी इन योर इन्वेस्टमेंट्स, then it should be for you. Exceptional returns नहीं मिलेंगे. Large cap funds में if you actually want to invest, you won't get exceptional risk. Marginal growth would be low compared to small or mid cap. Probability of return is low as they are slowly moving fund compared to growth. और ओनरशिप की भी पावर नहीं होती ज़्यादा. सो यहाँ पे थोड़ा सा सजेस्ट करा हुआ है. अगेन मैं कोई सजेशन नहीं दूंगा, एनालिसिस करते हैं. नाउ यहाँ पे जिन्होंने ये इन्वेस्टमेंट बनाई है, शी जिनपिंग इन्वेस्टर्स ने, दोस्त है मेरे, they have come up with an exclusive 6-phase analysis of selecting a mutual fund. Investment objective is generally taken into account whether the fund's objective are common or not. Common objective matlab win-win situation hai. Fees and expenses that you need to take because you need to understand the percentage return that you will be getting. You don't want higher returns with higher fees, because the goal is to actually get higher returns with a marginally average fees that you are actually paying, because it will be the fund house that will be making money if agar higher fees hogi. So portfolio में I believe that you need to do a deep dive, थोड़ा सा deep dive करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स पोर्टफोलियो में. Example, top sectors, top companies with respect to the 5 of the net assets. Even with the best mutual fund, there is amount of risk always involved there, because when you're directly targeting markets, obviously there will always be risk. So better safe than sorry rakho, because risk is directly proportional to return. Figure out your risk appetite and risk requirement, because you have to be better safe than sorry. So how you can do analysis? First, you need to understand who the manager is. What is the historic performance done by the manager? Okay, if the manager is not the right person, or if he's a newbie, there is possibility that their exposure might not be enough to actually get you the right return that you want from it. Fundamental analysis. So what do you need to look at? So time to apply. So Axis Mutual Fund का यहाँ पे कर रहे हैं, Axis Romero Blue Chip Fund. Long-term capital appreciation, diversified portfolio, and securities of large cap companies including derivatives. तो गोल यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का ये है टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन by investing in a diversified portfolio predominantly consisting of equity and equity related securities of large cap companies. ठीक है, तो लार्ज कैप कंपनीज में और उसके डेरिवेटिव्स में आपको इन्वेस्ट करना है. दैट इज योर गोल, एंड देयर कैन बी नो एश्योरेंस दैट द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम कैन बी अचीव्ड. एक्सपेंस रेशियो इज 1.7. दैट इज हाई. सो अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे, यू नीड टू पे 170 रुपीज टू द फंड इन ऑर्डर टू मैनेज योर मनी. इफ द अगर फंड ने 15% का आपको रिटर्न दिया, यू वुड अर्न एसेंशियली 13.3%, क्योंकि 1.7 फंड हाउस ले लेगा. नॉट ए ग्रेट, एक्चुअली इट वुड बी हाई, बट क्योंकि 1.7 इज हाई, मैं हाई मांगता हूँ. 1 के ऊपर कोई भी एक्सपेंस रेशियो डालती है, अकॉर्डिंग टू माई रिस्क एपेटाइट, मैं बोलता हूँ ठीक है, आई विल पुट माई मनी इन अ स्टॉक दैन पे दिस मच अमाउंट ऑफ रेशो एसेंशियली. ओवरव्यू देखते हैं पोर्टफोलियो. तो इन्होंने टॉप 10 उनके किस में एलोकेशन करी हुई है. HDFC बैंक में 9%, इन्फोसिस लिमिटेड विच इज IT 9.3, बजाज फाइनेंस इज अ फाइनेंस कंपनी 7.6, रिलायंस अब एनर्जी स्लैश IT में जा रही है 7.6%, कोटक महिंद्रा बैंकिंग सेक्टर 6.3, TCS IT 5.9, ICICI बैंक अगेन बैंकिंग, एवेन्यू सुपरमार्ट्स दैट इज डीमार्ट तो रिटेल सेक्टर हो गया 5% एलोकेशन,
HUL रिटेल सेक्टर अगेन 4.3 मतलब कंज्यूमर गुड्स, भारतीय एयरटेल विच इज टेलीकॉम 4.2। तो इनकी फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका सेक्टर हाईएस्ट एलोकेशन है 34%। कंज्यूमर गुड्स में आ गए हिंदुस्तान यूनिलीवर, एवेन्यू सुपरमार्ट्स 17%। आईटी में आ गए थे इनके टीसीएस, इन्फोसिस और थोड़ा बहुत रिलायंस, थोड़ा बहुत क्योंकि अभी उनका पूरा ट्रांजिशन हुआ नहीं है टू ए सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी, तो 15%। देन फार्मा एंड ऑयल 8 and 7%. So it invests in basically blue chip company. Blue chip company are well established, recognized and financially healthy company. So सारी कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया, आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, इनकी एड्स देखी होंगी अपनी लाइफ डे टू डे लाइफ में। रिलायंस, टीसीएस, आईटीसी, एचडीएफसी सब आपने सुने हुए हैं, इनके प्रोडक्ट्स आपने यूज करे होंगे। मैनेजर की इंफॉर्मेशन देखा जाए अगर इस फंड में, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए दे रहा हूं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज कीप दैट इन माइंड। सो he is the sole manager of Axis Blue Chip Fund and he has an experience of, so he यहाँ पे experience mention नहीं करा हुआ है, यहाँ पे experience mention करना चाहिए था इस PDF में, that would be my recommendation। Fundamental analysis करते हैं चलो। Alpha is 3.13 which is good, Beta 0.74 good, इंडेक्स का 1.19 है, इंडेक्स का बीटा 0.8 है, तो इंडेक्स से कम है इनका बीटा। R squared is 87.97. Obviously, it has to be higher than 80, less than 90. That is good. Index का 32.2 है. Sharp ratio 0.2, index का 0.08. So you need to understand that the fund as of September 30, 2020, large cap as of some or S&P. So calculation benchmark जो है S&P BSE 100 trillion INR. So तो ये ऐसे है। Alpha is 3.13, which means 3.13% better than benchmark. In this case जो है, जो यहाँ पे यूज करा वो S&P BSE 100 को benchmark लिया हुआ है, उस इंडेक्स को। Look at the large cap category. कैटेगरी का अल्फा -1 है, so it shows कि blue chip will outperform its peers. Beta of blue chip fund is 0.74, lower than index. जो इंडेक्स है S&P BSE 500 0.83 एंड 93 इस कैटेगरी में है, लेकिन इसका उससे कम है, तो लो बीटा मतलब इसका फ्लक्चुएट नहीं होगा अगर बेंचमार्क में फ्लक्चुएशन होती है। आर स्क्वेयर्ड अगर देखा जाए 87.97 है, विच मीन्स दैट इट इज बिटवीन 80 to 90। सो एज प्रीवियसली डिस्कस इट हैज टू बी बिटवीन 80 to 90। तो उसकी जो बेट्स, द रिस्क दैट दे आर गोइंग टू टेक, इट्स गोइंग टू गिव अ रिटर्न विच विल बी हाईली रिलायबल। ठीक है, सो दिस इज इट। हाँ, इसके बाद एक और इन्होंने म्यूचुअल फंड डिस्कस करा हुआ, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। चलो अब आते हैं सुबिक्स पे। नाउ एज आई हैड मेंशन्ड वी विल आल्सो डू सुबिक्स का एनालिसिस। ओके ओके, सो कमिंग बैक टू सुबिक्स। अब इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट निकाली। इफ यू हैव बीन एन इन्वेस्टर, आई एम एन इन्वेस्टर, आई ओन अबाउट, I have taken a significant amount of stock in it and I am sitting on a massive profit. So मेरा 400% gain हो रखा है, but I still want it to be going up. Now this stock is essentially a small cap with a rank of 712. So obviously that's a very high risk stock जो मैंने mention किया। इसका बीटा is 4.67 times as volatile as Nifty। तो इसका बीटा आप खुद इमेजिन कर लो कितना हाई होगा, क्योंकि 4.6 टाइम्स दिस एज वॉलेटाइल व्हेन कंपेयर टू निफ्टी, और ये स्टॉक है आईटी सेक्टर का। पी रेशियो चलो बता देता हूं, सेक्टर पी है 38.75। इस स्टॉक की पी रेशियो है हायर देन सेक्टर, विच इज अ गुड थिंग, बट इज इट अ गुड थिंग, वो अभी हम रिपोर्ट इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आ गए ये रही। चलो, so this is the investor presentation that they have actually done for Q3 FY22 on February 1st 2022। so 3 दिन पहले की बात है ये। और एक न्यूज भी निकालते हैं, इनकी न्यूज जरूरी है।
न्यूज, मनी कंट्रोल पे न्यूज, हाँ, दैट्स इट। इससे ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। सो इस इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे क्वार्टरली फाइनल परफॉर्मेंस, व्हाट द लीडरशिप टीम इज डूइंग, एंड नोट्स का है, नोट्स हैं, चलो यहाँ दिखा दो, नोट्स नहीं है। स्क्रीन दिख रही होगी ना मेरी? नाउ नेचर ऑफ बिजनेस क्या है इस कंपनी का? दे आर अ पायनियर इन डिजिटल ट्रस्ट फॉर बिजनेसेस ग्लोबली। दे हैव focus on 6 tenets of digital trust like privacy, security, risk mitigation, identity, intelligence to enable trust across people, process, and teams. Subix's evolution as a product company has always been reflected in our ability to foresee an emerging need or trend and then build capabilities to help our customers address the inherent challenges that come with that trend. तो ये सारा कंपनी का मोटो है, वो सब अच्छी बात है, ये सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन इस चीज का सच हमें पता लगेगा व्हेन वी एक्चुअली लुक इनटू द हिस्ट्री की जो है उसका बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है नंबर्स में, तो वो देखना ज्यादा जरूरी है, आई बिलीव। नाउ देयर प्रोडक्ट्स किस टाइप के हैं, प्रोडक्ट्स जानना जरूरी है क्योंकि हमें इससे आइडिया मिलता है कि कंपनी किस किस लेवल पे किन कंपनीज के साथ कंपीट कर रही है। रेवेन्यू एश्योरेंस, नेटवर्क एनालिटिक्स, फ्रॉड मैनेजमेंट। फ्रॉड मैनेजमेंट में पेटीएम भी आता है, लेट मी टेल यू, वो मैं फ्यूचर में एक वीडियो है, आई विल लेट यू नो। आइडेंटिटी एनालिटिक्स, पार्टनर इकोसिस्टम मैनेजमेंट, आईओटी सिक्योरिटी। आईओटी में बहुत सारे अपकमिंग स्टार्टअप्स हैं दैट यू कैन लुक अप जो इससे compete करेंगे। एनालिटिक्स सेंटर ऑफ ट्रस्ट, तो इंडिया में इतने सारे एनालिटिक्स प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर हैं जिनका आपको आइडिया भी नहीं है, जो रिपोर्ट्स देते हैं बेस्ड ऑफ ऑफ कि ना आपके प्रोडक्ट में क्या यूसेज है, व्हाट इज द कस्टमर डूइंग, सो वो। ऑगमेंटेड एनालिटिक्स इज समथिंग यूनिक टू सुबेक्स। जब मैंने इसको इन्वेस्ट किया था स्टॉक में, देन आई न्यू कि ना ये एक नई फील्ड है जिसमें ये अपना पैसा डाल रहे हैं, विच माइट बी एबल टू गेट एंड ग्रो अहेड. Now, based off of this, they are saying that their revenue has gone by 877 million. So essentially 87 crores. इनका रेवेन्यू है 1.7% अप हुआ है। एबिटा, उस पे एबिटा इनका 80 मिलियन, 8 करोड़ का इनका एबिटा है, विच इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन। सो नेट प्रॉफिट में से अगर आप उसकी जो है ना टैक्स और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, एबिटा वो आ जाता है। सो उसका मार्जिन है 9.1% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 21 मिलियन रुपीस, वो हो गया 2.1 करोड़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो इनका प्रॉफिट 2.1 करोड़ का है। एक बार कंपनी के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। इट वाज फाउंडेड इन 1994, 25 ईयर से ये एग्जिस्टेंस में है, दैट्स अ गुड थिंग। 1000 एम्प्लॉइज। सो सिंस इट्स एन आईटी कंपनी, द मेजर एक्सपेंस दैट द कंपनी हैज इज इन ए सर्वर कॉस्ट होती है उनकी, और दूसरा उनका कॉस्ट होती है एम्प्लॉइज, क्योंकि अगर एम्प्लॉय इटरेशन हाई होगा, दे विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टू हायर एंड ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉइज। सो ये कॉस्ट कंपनी की सबसे ज्यादा हाई होती है। ऑफिस मैनेजमेंट इनकी ऐसी, क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बिल्ड हो रहा ना, इनकी जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो सारी की सारी सॉफ्टवेयर है, एंड सॉफ्टवेयर वी नो scales very easily. So that is something that we need to be very aware of. They are present in 90 plus countries. So that's a very good thing. It's very diversified. 200 plus customers across the globe. And their R&D spend is $3.1 million. That's a good thing. In new areas, FY21 में. And 106.4 million total contracted backlog. So जो उनके पास contract है, 106 million का contract है. All of this is good. बट न्यूज जो अभी हमें मनी कंट्रोल की मिली थी उसमें हमें पता लगा था दैट देयर प्रॉफिट इज डाउन। नाउ यहां पे इनके ईएमईए एशिया, सो ईएमईए होता है इमर्जिंग मार्केट्स अक्रॉस एशिया, एशिया मार्केट्स, एंड देन देयर इज अमेरिकास मार्केट्स। तो ये इन्होंने उसके अपने क्लाइंट का जो इन्हें लीगली एनओसी मिला हुआ है उसका स्नैपशॉट है। एसेंशियली 200 प्लस कस्टमर्स हैं दैट दे हैव अक्रॉस द ग्लोब। Strategic purpose, vision, goals, strategy. So they have a 3 horizon strategy for growth. Think customer, make it happen, create value, and win together.
नाउ ठीक है, ये आप मतलब ये आपको टिकट टेप से मिल जाएगा, मेरे को ये सब बताने की जरूरत नहीं है. लेट्स गेट डाउन टू देयर रेवेन्यूज ओनली. अब ये सब प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने ऊपर मेंशन करे थे: हाइपरसेंस, बिजनेस इंश्योरेंस, फ्रॉड एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एनालिटिक्स, आइडेंटिटी एनालिटिक्स, आईओटी सिक्योरिटी, एनोमली डिटेक्शन. सो इनका जो एसेंशियल प्रोडक्ट है ना, दिस इज मोस्ट लाइकली इन टेलीकॉम सेक्टर. लेट मी टेल यू दिस, कि इनका जो प्रोडक्ट टेलीकॉम सेक्टर्स को जो है ना एम्पावर करता है, उसके अंदर ये फिट इन होता है इस इंडस्ट्री में, बिकॉज दैट इज वेयर दे आर मोस्टली. नाउ दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द टारगेट एड्रेसेबल मार्केट, जो टैम होता है. हेल्थ केयर का मार्केट है, मतलब टोटल मार्केट टैम है $500 बिलियन का. मैन्युफैक्चरिंग में $28 बिलियन, बीएफएसआई, ऑयल एंड गैस, ई कॉमर्स, टेलीकॉम, सबका मिला के इन्होंने बताया इनका 500 बिलियन का टारगेट एड्रेसेबल मार्केट है, दैट दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू रीच आउट टू. एडवांटेज ऑफ हाइपरसेंस प्लेटफॉर्म, नहीं वो नहीं, मैं इसमें नहीं घुस रहा. इन्वेस्टमेंट रैशनल नहीं, ये एक बार देखते हैं. Subix is the preferred partner for digital trust. 25 years of experience, flexible engagement model, encompassing portfolio of digital trust, deep domain expertise and heavy investment on R&D, cutting edge technology, creating value for customers. So यहाँ पे ये दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू से कि देखो हमारे ऊपर तुम क्यों इन्वेस्ट करो एज एन इन्वेस्टर, और हम क्यों ग्रो करेंगे. तो दिस इज व्हाट द गोल इज फॉर इन्वेस्टर्स टू टेल देम. आ जाओ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ गई. यार इन्होंने बैलेंस शीट के हिसाब से नहीं दी. ठीक है, ओके. सो देयर ऑपरेटिंग रेवेन्यू इज एट 87.7 877.4 million, essentially 87 crore, up 1.7 quarter on quarter. So इनका operating revenue has increased by 1.7% quarterly. 9 million, नहीं नहीं नहीं, okay. FY22 operating revenue at rupees 25464. तो 250 crores का इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू स्टैंड एट FY22. एबिटा एट 80.33, so 8 करोड़ का इनका एबिटा, 8 करोड़ रुपीस का. मार्जिन ऑफ एबिटा इज 9.15%. FY22 एबिटा जो था इनका प्रीवियस वाला, दैट वाज एट 341 million, मार्जिन 13.4%. सो इनका एबिटा एक्चुअली डिक्रीज हुआ, दैट्स नॉट ए गुड थिंग. और इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू भी डिक्रीज हुआ है FY22 से, जो प्रीवियस था. सो नॉट अ गुड थिंग. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 53.2 million Q3 FY22 का. NM FY22 प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 334 million. सो उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी डिक्रीज हो गया. यार देख के दुखी हो रहा है. I'll be honest, I am not happy seeing this result at all. वो बोल अच्छा अच्छा रहे हैं, बट इट्स नॉट गुड. यहां देखो, Q3 FY21 93 करोड़, Q2 FY22 86 करोड़. इंक्रीज हुआ है Q2 FY22 से Q3 में, बहुत माइनर इंक्रीज है, बहुत ज्यादा नहीं है. Q3 FY21 was the highest growth that they have faced. EBITDA देखो यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ. हाँ, एक सेकंड, ठीक है. तो इनका EBITDA भी था Q3 FY21 में 204 मिलियन रुपीस में, सो 20 करोड़. अब ये बन गया है 8, एक सेकंड, 200, हाँ 20 करोड़ से 8 करोड़ हो गया है. इनका एबिटा कम हुआ है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अब डिक्रीज हो गया है. एम्प्लॉय हेड काउंट हैज इंक्रीज, सो हैज डिक्रीज इवन. Q3 FY21 से इंक्रीज हुआ है, बट Q2 FY22 से Q3 FY22 से ये डिक्रीज हो गया. रेवेन्यू मेट्रिसेस Q3 FY22. ओके, सो रेवेन्यू बाय रीजन, अमेरिका से 20% था, लेकिन अब वो 17% हो गया. EMEA से 59% था Q3 FY21 में, बट वो इंक्रीज हो गया 61% हो गया. एंड 21% हो गया APAC, पहले 19% था. एंड इंडिया में 2% था, वो 1% हो गया. नाउ देर आर सर्विसेज दैट दे आर ऑफरिंग. सो इनका सर्विसेज है मैनेज सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन कस्टमर लाइसेंस. सो 39 से 38% हो गया कस्टमाइजेशन लाइसेंस में, 28 से 27% हो गया मैनेज सर्विसेज में,
एंड इंक्रीज इन सपोर्ट सर्विसेज. सो सपोर्ट सर्विसेज इनकी इंक्रीज हुई है 33% से 35%. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, चलो आओ देखते हैं इसको. Revenue from operations has increased from Q2 FY22 से Q3 FY22 1.7% quarter on quarter growth हुई है. But if we look at the long term horizon, 31st December 2021 में से 2020 में इनका था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 270 करोड़. वहां से ये सिर्फ 87 करोड़ हो गया. ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नहीं हुई है, 7.7% डिक्लाइन हुआ है. टोटल इनकम में भी इनका डिक्लाइन हुआ ईयर ऑन ईयर 5.7% से, क्योंकि 88 करोड़ और जब 31 दिसंबर 2020 में थे तब देखो इनका था 270 करोड़. सो इनका डिक्रीज हुआ है. प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले 330 मिलियन था, 334 मिलियन. सो उसका मतलब हो गया 33 करोड़ से अब ये बन गया 5.3 करोड़. सो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50% से डिक्रीज हुआ. एंड नेट प्रॉफिट भी, नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल है, दैट्स अ गुड थिंग. 20 करोड़ मतलब 2 करोड़ है, बट पहले 20 करोड़ था. सो ऑब्वियसली 43% से डिक्लाइन हुआ ईयर ऑन ईयर. और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप बोलोगे सो इट्स डिक्लाइन बाय 56% क्वार्टरली. ओके, there's a decline. Consolidate annual P&L. So revenue, ठीक है. Let's look at the revenue from operations from FY17 to FY21. 3573. So essentially it's 375 crores. हाँ, 370 357 करोड़ था FY17, 324 करोड़ हुआ FY18, 348 करोड़ FY19, क्योंकि इट वाज ट्रेडिंग फॉर ए पेनी स्टॉक. FY19 और FY20 तक इट वाज ट्रेडिंग एसेंशियली एज अ पेनी स्टॉक. इसकी वैल्यू थी 5 रुपए, 10 रुपए. उससे इसका इंक्रीज होकर अभी प्राइस चल रहा है 43 रुपीज, 44.5 रुपीज. सो वहां से तो इन्होंने ग्रोथ दिखाई है. FY21 में दे एक्चुअली एक्सपीरियंस ग्रोथ कि इनका बन गया 364 करोड़ का इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आया. एंड इट वाज 94 करोड़. एबिटा था फ्रॉम 85 करोड़ FY17 से, बट इनका एबिटा जो है अभी 31 मार्च 2021 में इनका 98 करोड़ था. अब ये एनुअल पीएनएल है. अभी हमारे पास 2022 का पीएनएल नहीं आया, वो मार्च में रिलीज होगा. व्हेन दे रिलीज देयर एंड ऑफ द ईयर FY21 का पूरा ये दिखाएंगे एनुअल. सो तब तक या तो तुम लोग वेट कर लो उस रिजल्ट की. लेकिन बेस्ड ऑन दैट इन्वेस्टर्स लुकिंग एट मी, इवन आई वांट टू सेल, आई एम स्टिल being a little patient, to be very honest. So this is not a buy or sell recommendation at any point in time. Net profit was essentially FY17 में they had a loss of 43 crores. They got profitable 20 crores का हुआ FY18 में, 25 करोड़ 19. फिर इनका लॉस हुआ and that was a massive loss of 269 crores का loss in FY20. Coming back to profits, they again got profitable जब 31 मार्च 2021 में 51 करोड़ का प्रॉफिट. एंड द रीसेंट अपडेट्स. सो ये कस्टमर टेस्टिमोनियल है, आपको पढ़ने होंगे, आप पढ़ लेना. अगेन ये टिकर टेप पे अवेलेबल है, यू फॉर फ्री, यू कैन रीड इट. और भी प्लेटफॉर्म्स है, जस्ट टाइप इट इन गूगल, आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी. ठीक है. यूजर कॉन्फ्रेंस. तो दे हैव गुड कस्टमर्स. सो जियो इनका अच्छा कस्टमर है. दे हैव टेलीफोनिका, इट्स अ बिगर ब्रांड. डॉइच टेलीकॉम, that's a big brand. They have good companies in their portfolio, जो big brands इनके पास हैं. So essentially company has potential. But क्या ये competition के साथ deal कर पाएंगी in terms of their products and their offerings? Because जो अभी हमने देखा था, एक बार ऊपर दिखाता हूँ मैं. इनका सर्विस, रेवेन्यू बाय सर्विस जो है ना, इनका जो मैनेज सर्विसेज है ना इनका, और इम्प्लीमेंटेशन, कस्टमाइजेशन एंड लाइसेंस, ये दोनों चीजें डिक्रीज हुई हैं. 38% हो गया और 27% हो गया मैनेज सर्विसेज. वो ठीक है. सपोर्ट सर्विसेज जो है ना एसेंशियली होता है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टर्म होता है, 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है. एंड देन इट जस्ट एंड्स की सपोर्ट अब जरूरत नहीं है तो उसके लिए तुम किसी और को हायर कर सकते हो फॉर चीपर.
So that's not a very good indication कि कंपनी क्या कर रही है in that very scenario. So उस चीज को अपने ध्यान में रखना. ओके ठीक है. यहाँ पे इन्होंने पूरा पीआर किया हुआ मीडिया कवरेज है, टेलीनेट, फोर्ब्स. ठीक है. सो मैं इन्वेस्टर हूँ इन द कंपनी, बट आई एम नॉट सेइंग एनी बैड थिंग अबाउट इट. मैं रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ अभी. गार्टनर मेंशंस लीडरशिप टीम. ओके. CEO and managing director. So he's been with the company. He's not the founder. CEO, Chief Technology Officer, Management Team. ठीक है. कोई notes हैं? Okay, so this was the investor presentation by Subex. They actually released it on like January 22 का इन्होंने बनाई होगी, and they released it on 1st February 2022. एक बारी मनी कंट्रोल पे भी देखते हैं. So Subex consolidated December 2021 net sales 87.7 crore, down 6.5% year on year. 44.5 रुपीज का भी ये स्टॉक की परफॉर्मेंस है. और नेट सेल्स देख लो, डाउन फ्रॉम 93 करोड़ दिसंबर 2022 में, 2020 में 93 करोड़ था, 87 करोड़ है 97 दिसंबर 21 में. नेट प्रॉफिट भी जो है डाउन है 76%. पहले 8.7 करोड़ था नेट प्रॉफिट, अभी 2 करोड़ रह गया. और एबिटा इज डाउन 59%. 21 करोड़ था दिसंबर 2020 में, दिसंबर 21 में 8.7 करोड़ हो गया. इट्स नॉट गुड. Earnings per share decreased 0.04% in 2021 from 0.16. बहुत मतलब क्या बोलूं यार, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू लुक एट दीज थिंग्स ना. अच्छा नहीं लगता देखने में. तो देख लो, यही सारी चीजें बताई मैंने अभी तुम्हें पूरा इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ के. और कुछ अगर अलग है इनका अदर एक्सपेंसेस, तो देयर एक्सपेंसेस, जो अदर एक्सपेंसेस है, दे हैव एक्चुअली इंक्रीज्ड, जिसने इम्पैक्ट किया होगा उनके प्रॉफिट को. तो 24 करोड़ बन गया दिसंबर 21 में, और सितंबर में इट वाज ओनली 21.9, तो 22 करोड़ था, तो 2 करोड़ बढ़ गया. ठीक है. सो प्रोमोटर्स इन शेयर होल्डिंग, प्लेज्ड एंड इनकम्बर्ड, नॉन इनकम्बर्ड, इन चीजों में कोई डेटा कुछ चेंज हुआ है. प्रोमोटर्स ने अपना शेयर्स नहीं बेचे हैं. पब्लिक शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है. ईपीएस दे हैव डिक्रीज, 0.16 था से 0.04 हो गया. और दैट वाज इट. सो या ये थी वीडियो. आई होप you enjoyed it. I hope you actually got some valuable information out of it. क्योंकि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालिसिस था इस चीज़ का, कि हमने पूरा म्यूचुअल फंड का एनालिसिस किया. देन वी मूव टू दिस सुबेक्स प्रेजेंटेशन. वो छोटी सी थी, ऑब्वियसली आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू बी रियली मैसिव लाइक दैट. तो एक सेकंड, जस्ट लेट मी, या हाँ. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी यार, है ना. यू गॉट टू नो समथिंग न्यू, यू गॉट टू नो कि कैसा है, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, किस में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. Again, it's none of it is investment advice. Please do not take any of this as an investment advice. Do this and watch this with an approach of learning from it, and not just learning and getting awareness. उसके बाद अपनी खुद की रिसर्च करो and then make decisions. क्योंकि जब नुकसान होगा ना, अगर नुकसान हुआ, you will not be able to blame anyone else. Keep that in mind. वो सबसे ज्यादा important factor है. So keep that thing in mind कि जो है ना, नुकसान ना हो तुम्हारा. इसलिए अपनी रिसर्च करो, एजुकेशन पर्पस से देखो, और एजुकेशन पर्पस से जो है ना उस चीज को यूटिलाइज करो. एंड सेइंग दैट, आई विल से एड्यू. आपने वीडियो अगर देखी, आई डू एंजॉय दैट. लाइक मेक श्योर टू एक्चुअली गिव अ लाइक. सो वी हैव अबाउट 17 पीपल राइट नाउ वाचिंग, कंकरेंट व्यूअर्स नहीं है. एंड yeah, that's it. That was the conclusion. I do hope you enjoyed it. That was a weekend research. Okay, bye. Tada.